7,516 kilometers. Shipping industry accounts for 13.4% in country's GDP growth. It handles about 95% of the country's trade by volume and 70% by value. The government plans to invest rupees 7,000 crore only in port infrastructure project by 2035 to bolster the maritime sector. सर, इससे पहले भी मोदी जी ने अगले साल इंडियन पोर्ट बिल 2024 लाए थे और देखने की बात यह है कि इंडियन पोर्ट एक्ट भी आजादी से पहले बने 2908 जो बना था वो सुधारने का कांग्रेस में अभी कोई समझ नहीं आई थी. Additionally, the government plans to establish shipbuilding and repair clusters in 5 states: Gujarat, Maharashtra, Kerala, Andhra Pradesh and Odisha. These clusters will not only generate employment opportunities but also bolster India's position as a global hub for ship manufacturing and maintenance. The bill also seeks to integrate the coastal maritime transport with inland waterways. Sir, madam, Congress never invented and invested in ports and shipping. Madam, with your kind permission, I may recall that on June 1924, the Modi government approved plans to invest over 800 billion rupees in the construction of Vadhavan port located in North Mumbai, which is going to be one of the top ports in the world in future. Madam, it is also heard that to boost the shipping industry of India, the government is planning to establish a new shipping company to expand its fleet by at least 10,000 ships in the next decade. ये है मोदी का विजन और मिशन. On July 26, 24, Modi government announced new shipping financial assistance policy, providing financial aid of rupees 337 crore to enhance India's competitiveness against foreign shipyards. Since the inception of the policy, 313 vessels orders worth rupees 10,000 crore has been secured. Our Gujarat has also a vast coastline of 1,600 kilometers, which has 3 ports, Kandla, Mundra and Hazira, which has great potential if developed to generate employment and fisheries business in the state. Hazira near Surat is the less developed, and I demand that some fund may be provided for development of Hazira fund. Apart from that, seashore is near to Surat, Dimmas and Rafari and Dandi. These 3 shores, if developed fully and if provided fund, then they have great potential for the fishermen of the city. The proposed bill is a key component of India's comprehensive strategy to accelerate the growth of its maritime sector. The country aims to double its container handling capacity within the next 5 years, potentially creating an estimated 20 lakh jobs. By fostering a more favorable regulatory environment, the bill is expected to play a pivotal role in achieving these ambitious goals. Additionally, the government plans to establish shipbuilding, repair clusters in 5 states. These clusters will help to boost development. This bill is unique in the sense of licensing reforms, integration with inland waterways. It will also boost comprehensive database development for the shipment and, most importantly, boost seafarers and shipbuilding in the country. To conclude, the bill represents a transformative step towards revitalizing India's maritime industry by simplifying processes, reducing bureaucratic hurdles, and fostering a more business-friendly environment. By introducing standardized and expedient clearance, the bill mechanism and simplifying regulation, it aims to make the sector more attractive to operators and investors. It will attract FDI and foreign investment in the future. The removal of licensing reforms will streamline coastal shipping operations, enhancing efficiency and cost effectiveness, while driving growth and investment in the industry. Ultimately, this reform will boost the competitiveness of India's coastal shipping sector, improving its global standing
and creating new opportunities for innovation and expansion. In all, I support the shipping bill, which will carry the India towards developed Viksit Bharat to 2047 mission of Narendra Modi. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री एम गुरुमूर्ति जी. Thank you, madam. Thank you for allowing me to discuss on the Coastal Shipping Bill 2024, madam. I would like to highlight its transformative potential for India's maritime sector by emphasizing its key positives, madam. Madam, Clause 4 of this bill simplifies regulatory process, madam, by allowing the Director General to grant license for costing trade, madam. Madam, it encourages more domestic operators to engage in coastal shipping and boosting domestic shipping activities, madam. Madam, Clause 8 of 2B integrates coastal shipping with inland waterways, madam. It creates a seamless multimodal transport network, madam. This enhances connectivity and reduces transportation costs, benefiting both domestic and international trade, madam. In Clause 8 of 2F promotes the use of Indian-built vessels, supporting domestic shipping and repair industries, madam. This clause of 8.2F fostering self-reliance in maritime infrastructure and it creates jobs, madam. In Clause 9 of this bill, establish a national database for coastal shipping to ensure transparency and aid in information sharing, madam. This enhancing transparency and facilitating better decision making, madam. These provisions collectively aim to modernize India's maritime sector, promote domestic participation and enhance national security through the robust coastal fleet, madam. Madam, I would like to seek clarification from the Honorable Minister for the following questions, madam. On Clause 3, how will the statutory imposition of different licenses conditions on foreign vessels affect international trade and foreign investment, madam? Especially considering this clause, which prohibits foreign vessels from engaging in coasting trade without a licenses, madam. Madam, on Clause 15 and 25, will the stringent penalties introduced disproportionately affect smaller business persons, madam? And if so, what measures can be taken to mitigate this impact, madam? On Clause 37, how will the government ensure consistent enforcement of the law under this clause, which allows for exemptions and delegation of power to prevent favorism or uneven application of laws, madam? On Clause 8.2b, what steps will be taken to ensure the seamless integration of coastal shipping with inland waterways as proposed in this clause to maximize its benefits for domestic trade and in especially states like Andhra Pradesh, which has second longest coastal line, and we took major strides to developing new ports and harbors, madam. On the environmental compliance, how will the integration of environmental standards under the bill be enforced and what specific measures will be taken to ensure compliance, madam? Thank you, madam. I support this bill, madam. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह जी. श्री सुधाकर सिंह जी. सभापति महोदया, मैं इस सदन में कोस्टल शिपिंग बिल 2024 का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। इस विधेयक के शीर्षक में शिपिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जैसे शब्दों के माध्यम से एक आधुनिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण का आभास दिया गया है, लेकिन जब हम इसके प्रावधानों को गहराई से पढ़ते हैं तो स्पष्ट होता है कि विधेयक दरअसल सरकार की उसी केंद्रीकृत नीति और निगरानी परक शासन प्रणाली का विस्तार है जो लगातार विधायी प्रक्रियाओं को कमजोर कर रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समुद्री व्यापार या आधुनिकीकरण के विरोध में नहीं खड़ा हूं। मेरा विरोध इस दृष्टिकोण से है जिसमें लोकतांत्रिक भागीदारी, क्षेत्रीय विविधता और व्यवहारिक जरूरतों की उपेक्षा की गई है। सरकार यह दावा करती है कि यह विधेयक देश में नौवहन क्षेत्र में को गति देगा,
परंतु तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति मिलने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। कारण साफ है, नीतियों की अस्पष्टता, प्रक्रियाओं की जटिलता और सबसे अहम भारतीय नाविकों और श्रमिकों को रोजगार में प्राथमिकता देने की गारंटी नहीं। यह विधेयक रोजगार निर्माण की बात तो करता है, लेकिन इसे कहीं नहीं लिखा है कि भारतीय नागरिकताओं को भी प्राथमिकता मिलेगी, न कोई न्यूनतम प्रतिशत तय किया गया है। अगर सरकार वाकई इस क्षेत्र में को रोजगार उत्पन्न करने वाला इंजन बनाना चाहती है तो कम से कम 50% नौकरियां भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। भारत के बहुत सारे नौजवान दुनिया के अन्य देशों में नौ परिवहन में काम कर रहे हैं। लोग लगातार खबरें आती हैं कि विदेशों में जो हाईजैक कर लिए जाते हैं समुद्री जो जहाज और बरसों तक उसमें फंसे रहते हैं। इस विधेयक में 2 वर्षों के भीतर एक राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग रणनीति बनाने की बात की गई है, लेकिन इसमें स्थानीय उद्योगों, मछुआरों और विशेषकर क्षेत्रीय विशेषज्ञों की कोई भागीदारी नहीं दिखती है। यह भारत की व्यापक परिवहन और व्यापारिक आकांक्षाओं से स्पष्ट रूप से कटा हुआ प्रतीत होता है। विशेष रूप से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक ढांचे में आंतरिक जलमार्गों को एकीकृत करने की अत्यंत आवश्यकता के संदर्भ में कोई यहाँ चर्चा नहीं है। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लॉजिस्टिक लागत को कम करने की बात करती है, लेकिन यह विधेयक नदी परिवहन की क्रांतिकारी संभावनाओं को पूरी तरह से बेदखल कर देती है। खास तौर से बिहार जैसे राज्यों में जिन्हें प्राकृतिक दृष्टि से अद्वितीय भौगोलिक लाभ प्राप्त है। बिहार में 7 प्रमुख नदियां गंगा, गंडक, घाघरा, कोसी, सोन, कर्नासा और पुनपुन नदी बहती। यह प्राकृतिक राजमार्ग अभी भी भारी रूप से उपेक्षित है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत घोषित 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से कई जैसे NW1, NW37, NW58 मुख्य रूप से बिहार होकर गुजरते हैं, जिससे नेपाल को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधा देने की बात कही गई है। और समुद्री मार्ग से नेपाल के साथ जो हमारा समझौता हुआ है भारत का, वो इन्हीं नदियों के माध्यम से संभव हो पाएगा। इसलिए इन नदियों पर भी कोई बिना जोड़े हुए हम नेपाल को समुद्री व्यापार का रास्ता दे नहीं पाएंगे। गंगा नदी विशेष रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का हिस्सा है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होकर जाती है। कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी अंतर्राज्यीय जलमार्ग परियोजनाओं में से एक बिहार के व्यापार को बदलने की असीम संभावनाएं रखती है। उपलब्ध आंकड़े की दिशा में स्पष्ट रूप से इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के जरिए माल ढुलाई की लागत 1 रुपये 30 पैसे प्रति टन किलोमीटर है, जबकि रेल से 2 रुपये 41 पैसे और नदी के जरिए 3 रुपये 62 पैसे खर्च आ रहा है। वहीं जो साहिबगंज टर्मिनल पर लागत 4.5 रुपये प्रति टन है। यह आंकड़े मामूली नहीं है, यह आर्थिक क्रांति के वाहक हैं। साथ ही IWT न केवल 4 गुना कम ईंधन कम करता है, बल्कि कम प्रदूषण, न्यूनतम शोर और लगभग 0 दुर्घटना लागत के साथ माल परिवहन का सबसे टिकाऊ और पर्यावरण सम्मत तरीका है। बिहार जैसे राज्यों में जहां रोजगार और औद्योगिक संपर्क दोनों की नितांत आवश्यकता है, IWT आर्थिक दक्षता और पारिस्थितिक संतुलन दोनों को प्रदान करता है। हमने इसके सफल उदाहरण भी देखे हैं, जहां गंगा के जरिए विदेशों से उर्वरक पटना फतुहा तक, सीमेंट पटना तक और गाड़ियों और कलपुर्जों की सप्लाई वाराणसी तक देखने को मिला। हाल में भारत और नेपाल के बीच हुए समझौते के अनुसार गंडक और कोसी नदियों को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे नेपाल को समुद्र तक पहुंच मिलेगी और बिहार को क्षेत्रीय व्यापार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर मिलेगा। लेकिन परियोजनाओं के लिए गहरी जलधाराएं, उच्च क्षमता वाले बार्ज, सीमा पार लॉजिस्टिक समन्वय की आवश्यकता है, जो कि एक स्पष्ट, समर्थक और दूरदर्शी कानूनी ढांचे के बिना संभव नहीं। यह विधेयक दुर्भाग्य से इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं करता, सिर्फ समुद्री वाहकों, विदेशी शिपिंग कंपनियों तक सीमित रहता है। बिहार और पूर्वी भारत के लाखों उत्पादकों, व्यापारियों, किसानों को पूरी तरह अनदेखा करता है, जिनके लिए सस्ता और विश्वसनीय व्यापार संपर्क जीवन रेखा बन सकता है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, बिहार की यही नदियां जो हर साल मानसून में बाढ़ बनकर तबाही लाती हैं, यदि समझदारी से प्रबंधित और नेविगेट किया जाए तो समृद्धि की रीढ़ बन सकती है। गंगा, कोसी या सोन के डरने के बजाय हमें उनकी ताकत को आर्थिक धमनियों में बदलने की आवश्यकता है। हर साल तटबंध बनाना और बाढ़ राहत देना कोई समाधान नहीं, जबकि नदियों की खुदाई, ड्रेजिंग, टर्मिनल निर्माण, फ्लड प्लेन्स, इंडस्ट्रियल हब,
बार्ज नेटवर्क में निवेश करना एक दूरदर्शी रणनीति है। नियंत्रित नौ परिवहन के लिए निरंतर रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिसमें खुदाई, तट मजबूती, ट्रैफिक नियंत्रण शामिल है और यह साल भर रोजगार देता है। सुपौल, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, अररिया, मधेपुरा जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों को आंतरिक लॉजिस्टिक गलियारों में बदलना उन्हें आपदा क्षेत्र से विकास क्षेत्र में बदल सकता है। हर टन माल जो नदी से ढोया जा सकता है वह केवल पैसा और ऊर्जा नहीं बचाता, यह शांति, स्थिरता और गरिमा की बुनियाद भी बनाता है। उन क्षेत्रों में से जो अब तक सिर्फ विस्थापन और पीड़ा के प्रतीक रहे, यह बदलाव है जिसके बिहार की जनता हकदार है। और माल परिवहन पर कोई भी गंभीर कानून, चाहे समुद्र के जरिए या नदी के, इतनी हिम्मत और कल्पना होनी चाहिए कि इस परिवर्तन को संभव बना सके। यही वह कानून जिसके भारत को जरूरत है, न कि खोखला विधेयक जो शिपिंग कंपनियों को सेवा करता है लेकिन भारत के जलपोत निर्माताओं को भूल जाता है। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सदस्य श्री टी उदय श्रीनिवास जी। Honorable Speaker, I rise today in strong support of Coastal Shipping Bill 2024, a crucial step towards unlocking India's immense maritime potential. Despite having a 7,500 kilometers coastal line and key access to global shipping routes, coastal shipping accounts only 7% of India's total freight movement. This is a missed opportunity, especially when coastal shipping is 60 to 70% cheaper than the road transport and 30 to 40% cheaper than the rail transport. Strengthening this sector can help reduce India's high logistic cost of 14 to 15% of GDP compared to the global average of 8 to 10%. The Coastal Shipping Bill 2024 stands as a cornerstone reform designed to regulate, modernize and revitalize India's coastal shipping industry. One of its most significant provisions is the expansion of the definition of coasting trade. Beyond just transports of goods and passengers, it now includes vital services such as offshore exploration, research and commercial activities. This is a game changer because nearly 50% of Indian flagged vessels operate in the offshore sector. By bringing them under a structured regulatory framework, this bill will attract investment, enhance operational safety and strengthen India's position in offshore oil, gas and maritime services. Additionally, this bill eliminates licensing requirements of Indian-owned vessels, removing bureaucratic hurdles and making operations more seamless. This is an essential reform because today only 1.2% of global shipping tonnage is registered under the Indian vessels. For below our economic potential, prioritizing Indian-built and Indian crude vessels will create thousands of jobs for our Indian seafarers and reduce our reliance on the foreign flagships. Sir, this reform is not just economic. It is about protecting our people. India is the third largest provider of seafarers globally, contributing nearly 10% of maritime workforce. At most, Indian seafarers are employed on foreign-owned vessels, leaving them vulnerable to exploitation. Disturbingly, India recorded the highest number of abandoned seafarers in 2024. To safeguard our maritime workforce and ensure stable employment, this bill can incorporate provisions to mandate minimum quota of Indian seafarers and Indian flagged vessels. Honorable Speaker, a key feature of this bill is establishment of National Coastal and Inland Shipping Strategic Plan, aimed at integrating our 14,500 kilometers of inland waterways with coastal shipping. This integration is essential to make maritime transport a cost-effective and efficient mode for goods and passengers. However, this vision cannot be realized without better maintained waterways. Sir, in the past 5 years, not even a single capital dredging project has been undertaken by the Inland Waterways Authority of India. Only maintenance dredging has been carried out. If we truly want to unlock the potential of our waterways, we must invest in large-scale planned capital dredging to ensure navigational depth and modernize India's dredging fleet with advanced technology. This bill lays the foundation for a coastal fleet which is owned and operated by Indian citizens. But truly realize this vision, we must build a fleet that is built, owned and operated by Indians. Strengthening our domestic shipbuilding industry is critical. The government has already taken commendable steps such as
the revamped shipbuilding financial assistance policy, the Maritime Development Fund of 25,000 crore, the establishment of shipbuilding clusters in 5 coastal states, including Andhra Pradesh. However, to maximize this impact of these initiatives, they must be expanded. My constituency, Kakinada, is the ideal location to drive growth of this sector. With its natural deep water port, strategic location, and well-developed industrial infrastructure, Kakinada is primed to becoming a leading shipbuilding hub. If we channel the right investments and policy support, Kakinada can be at the heart of the India shipbuilding renaissance. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, the NDA government is charting a new course for India's maritime future. Through bold reforms and strategic initiatives, we are not just boosting coastal shipping, but transforming India into a self-reliant maritime powerhouse, which is built on Indian ships driven by Indian talent and sailing towards global leadership. I conclude by extending my full support to the Coastal Shipping Bill 2024. Thank you, Madam. Jai Hind. धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजा राम सिंह जी। सभापति महोदया, ये बिल अपना पर्पस को शुरू में ही रखता है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू रेगुलेशन ऑफ कोस्टल शिपिंग, प्रमोट कोस्टिंग ट्रेड एंड इनकरेज डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन therein, to ensure that India is active to a coastal fleet owned and operated by the citizens of India for its national security and commercial needs, and for matters connected therewith or incidental thereto. मैं इस बिल के विरोध में इसलिए खड़ा हूं कि एक शब्द शुरू में चला था पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, लेकिन इसको हमने कुछ ही दिन में प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज होते हुए देखा था, और अब ये 4P में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है इस बिल से। वो है पब्लिक प्रॉपर्टीज फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। इस बिल के जरिए ये कोशिश की गई है और निजी मुनाफे को देश की सुरक्षा और देश हित में बताने की कोशिश की गई है। अभी वेणुगोपाल जी ने, माननीय सदस्य ने रखा था कि हल्दिया से लेकर के केरल के पोर्ट तक धीरे धीरे एक ही व्यक्ति का मोनोपोली बन रहा है। इस बिल में कहीं से भी इस मोनोपोली को चेक करने का, कंट्रोल करने का कोई प्रोविजन नहीं है, न तो भाड़ा नियंत्रण के मामले में, न ही मान लीजिए कि ड्रग्स बड़े पैमाने पर प्राइवेट पोर्ट से, प्राइवेट वेसल से आ जा रहे हैं, उसको नियंत्रित करने के मामले में, इसी तरह से इलीगल अन्य चीजों के मामले में कोई प्रोविजन इसके भीतर दिखाई नहीं देता है। मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की गई है और ये निजी मुनाफे को ही नेशनल सिक्योरिटी बताने की कोशिश कर रहा है। तो हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे मध्यकाल में राजाओं ने अपने व्यापार के लिए भिन्न भिन्न वेसल्स चला रखे थे, प्राइवेट ढंग से वो यूज करते थे, उसी तरह से इस पार्लियामेंट को अपना नेशनल ग्रिप कमजोर करते हुए प्राइवेट के हाथ में हवाले कर देने के लिए बिल लाया गया है। और सबसे दुखद बात यह है कि इसको कहा जा रहा है कि ये आजादी के 75वें साल में ये एक्ट हम स्वीकार कर रहे हैं। ये लगता है कि राष्ट्र हित और राष्ट्र की सुरक्षा से रिलेटेड बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ हम प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रहे हैं इस बिल के जरिए, और इसीलिए मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं, इसके खिलाफ मैं बोलता हूं। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री के नबस्कानी जी। நன்றி மாண்புமிகு அவைத் தலைவர் அவர்களே. துறைமுகங்கள் சம்பந்தமான மசோதாவிலே பங்கேற்று உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எங்களுடைய தமிழர்கள் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ராஜராஜ சோழன் வியட்நாம், கம்போடியா, லாவோஸ் என்று சைனா வரை கப்பல்களை வைத்து
துறைமுகம் மூலமாக ஆட்சி செய்தவர் கடாரம் கொண்டான் என்ற பெயரும் உண்டு. அதுபோல வ.உ. சிதம்பரனார் சொந்தமாக கப்பலை வாங்கி ஆங்கிலேயரை மிரள வைத்த ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரர். இப்படி துறைமுக மேலாண்மைக்கு தமிழர்கள் பெயர் பெற்றவர்கள், சிறந்து விளங்கியவர்கள். அந்த காலத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட துறைமுகங்கள் தமிழ்நாட்டிலே சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு வந்தது. அதன் மூலமாக வணிகம் செய்ய முடிந்தது. இன்றைக்கு 2-3 துறைமுகங்களை தவிர மற்ற அனைத்து துறைமுகங்களும் செயல்பாட்டிலே இல்லாமல் இருக்கின்றது. இயற்கையாக அமைந்த துறைமுகங்கள் எல்லாம் மூடிவிட்டு இன்றைக்கு செயற்கையாக துறைமுகங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றது இந்த அரசு. கிட்டத்தட்ட 5000 கோடி ரூபாய் குஜராத்திற்கு நிதி ஒதுக்கி, மகாராஷ்டிராவுக்கு அருகிலே நிதி ஒதுக்கி துறைமுகத்தை மேம்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். எங்களுடைய துறைமுகம் எல்லாம் மூடப்பட்டு கிடக்கின்றது. நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் குஜராத்துக்கு அமைச்சரா, இந்தியாவுக்கு அமைச்சரா என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. தமிழகத்திலே இருக்கக்கூடிய சிறப்பாக செயல்பட்ட கடலூரிலிருந்து நாகப்பட்டினம் கடற்கரை ஏரியா முழுவதும் சீர்காழி என்று தொண்டி வரைக்கும் இருந்த அந்த காலத்தில் செயல்பட்ட துறைமுகங்களை எல்லாம் மேம்படுத்த வேண்டும். அப்படி மேம்படுத்துகின்ற போது பல நாடுகளோடு வணிக ரீதியான தொடர்பு, கலாச்சார தொடர்பு ஏற்படும். அப்படி அந்த காலத்தில் சிறப்பாக முறையில் செயல்பட்ட துறைமுகங்களை மீண்டும் உருவாக்க வேண்டும். இன்றைக்கு இதில் வேதனை என்று சொன்னால், அந்த துறைமுகங்களை எல்லாம் தனியார் மயமாக்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த அரசு. அத்தனையும் அதானிக்கு தாரை வார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த அரசு. அதெல்லாம் நிறுத்தப்பட வேண்டும். கடல்களை பாதுகாக்க வேண்டும். கடலை பாதுகாக்கக்கூடிய மீனவர்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். எங்களுடைய தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள், ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் தொடர்ந்து சிறைபிடிக்கப்படுவது, அவருடைய படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவது தொடர்ந்து இந்த அவையிலே தொடர்ந்து அதை வலியுறுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம். பலமுறை ஒன்றிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து இதை சொல்லியிருக்கின்றோம். எங்களுடைய தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு முறையும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருக்கும் மாண்புமிகு பிரதமருக்கும் இது சம்பந்தமாக தொடர்ந்து வலியுறுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார். ஆனால் மீனவர்கள் சிறைபிடிக்கப்படுவது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. அவருடைய படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவது, அந்த படகுகளை எல்லாம் இலங்கை அரசு நாட்டுடைமை ஆக்கிறது, ஏலத்தில் விடுகின்றது. அவர்களுக்கு எந்த நிவாரணம் கொடுக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் எங்களுடைய தமிழக அரசு சார்பில் அங்கே இலங்கையிலே பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு படகுக்கும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் 6 லட்சம் ரூபாய் உதவி கொடுத்தார்கள். இப்போது அதை உயர்த்தி 8 லட்சம் ரூபாயாக அந்த நிவாரணம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் ஒன்றிய அரசின் சார்பில் 1 ரூபாய் கூட அவர்களுக்கு நிவாரணம் கொடுக்க முடியவில்லை. அவர்கள் கைது செய்யப்படுவதையும் இந்த அரசு தடுக்கவில்லை. அவர்களுக்கு இன்றைக்கு இலங்கை அரசு அதிகமான அபகாரத்தை விதித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ரூபாயை அந்த படகுகளுக்கும் கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் பிணையில் வருவதற்கும் அந்த அபகார தொகையை விதித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த இலங்கை அரசை கட்டுப்படுத்த முடியாத அரசா நம்முடைய இந்திய அரசு இருக்கு என்கின்ற ஒரு கேள்வியை உங்களிடத்தில் மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் மூலமாக வைக்கின்றேன். இலங்கை அரசு பாதிக்கப்பட்ட போது, பொருளாதார ரீதியாக மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்ட போது மனிதாபிமான அடிப்பிலே இந்தியா மிகப்பெரிய உதவி செய்தது. அதையெல்லாம் வரவேற்கின்றோம். அதே நேரத்தில் எங்களுடைய மீனவர்கள் அங்கே பாதுகாப்பாக மீன் பிடிக்கக்கூடிய உரிமையை இந்த அரசு பெற்றுத் தர வேணாமா? கச்சத்தீவு பகுதியிலே தமிழக மீனவர்கள் மீன்பிடிப்பதை, பாதுகாப்பாக மீன்பிடிப்பதை, அவர்கள் கைது செய்யப்படுவதை தடுக்க இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கணும். இது சம்பந்தமாக தொடர்ந்து வலியுறுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம். மீனவர்கள் தான் இந்த கடலுக்கு பாதுகாப்பு. அதன் மூலமாக தான் நீங்கள் இந்த துறைமுகத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய இந்த மேலாண்மை திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியும். நீங்கள் கடல் போக்குவரத்தை சீர்படுத்த முடியும். கடலை பாதுகாக்கக்கூடிய மீனவர்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துங்கள். குறிப்பாக எங்களுடைய தமிழக மீனவர்கள், குஜராத் மீனவர்கள் பாகிஸ்தானுடைய கடற்படையால் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய இந்த அரசு தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்படும் பொழுது அத்தகைய நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை. உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழக மீனவர்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். இரு நாட்டு மீனவர்களுடைய அமைப்பு பிரதிநிதி பேச்சுவார்த்தை மீனவ பிரதிநிதிகளோடு நடத்தி இந்த பிரச்சனையை முடிவு கொண்டு வேண்டும். பல நாடுகளில் அண்டை நாடுகளோடு மீன்பிடிக்கக்கூடிய மீனவர்கள் எந்த பிரச்சனையெல்லாம் மீன்பிடிக்கின்றார்கள். இந்த இலங்கை தமிழக இந்திய மீனவர்களுடைய பிரச்சனை மட்டும் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கிறது. ஒன்றிய அரசு அதிக கவனம் செலுத்தி தீர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி. Honorable Member Sri Anand Bhadoria ji. धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पर अपनी राय अपनी पार्टी की तरफ से रखने का अवसर प्रदान किया है। सभापति महोदय, हम लोग इस सदन में जब से चुन करके आए हैं, सरकार की तरफ से कई सारे विधेयक प्रस्तुत किए गए, लेकिन ज्यादातर जो बिल आए हैं
उसके दो कारण हमें समझ में आए। एक तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाना कि हम इतने अमेंडमेंट लेकर के आए हैं, हमने इतने पुराने नियमों में संशोधन किया है, और दूसरा कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसके व्यापार के बिना पर, उसकी जरूरतों के बिना पर, उसके व्यापार के हितों की अनदेखी करके जो बड़े व्यापारिक मित्र हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने के लिए विधेयक, अमेंडमेंट, बिल लाने का काम हो रहा है। जो दर्जनों जो तटीय पोत परिवहन विधेयक आया है, सभापति जी, हम कहने को तो मछुआरों के और तटीय इलाके के लोगों के हितों को लेकर के आए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं। हम 1 अप्रैल को जब आज चर्चा कर रहे हैं 1 अप्रैल को, तो कहीं ना कहीं ये मछुआरों के लिए एक धोखा साबित होने का काम हो। हमने रामचरितमानस में भी, सभापति महोदय, इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जो मछुआरे हैं वो अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो उन्हें निषाद समाज के लोग निषाद समाज के अंतर्गत आते हैं, केवट समाज के अंतर्गत आते हैं। ये वही केवट और निषाद समाज के लोग हैं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को नौका में बिठा करके गंगा पार कराने का काम किया था और उतराई भी नहीं ली थी, लेकिन आज वो मछुआ समुदाय संकट में है। सभापति जी, देश के समुद्री व्यापार, मछुआरों और छोटे जहाज मालिकों के हितों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस बिल में कहा गया है कि भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों को लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यह सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि जब आप विदेशी कंपनियों को भारतीय तटीय व्यापार में शामिल कर रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि भारत का 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, लेकिन हमारे पास अपने जहाजों की तो संख्या नगण्य है सभापति जी, अपने जहाज है ही नहीं। तो फिर सरकार विदेशी जहाजों को भी तटीय व्यापार में लाने का काम करेगी और जिससे भारतीय शिपिंग कंपनियों का व्यवसाय चौपट हो जाएगा। क्या सरकार को अपने जहाज बनाने पर, अपने जहाज लाने पर काम नहीं करना चाहिए था? कबीरदास जी ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। लेकिन सरकार गहरे पानी में नहीं उतरना चाहती, केवल विदेशियों को लूटने का रास्ता देना चाह रही। इस बिल में सर्विसेज को तटीय व्यापार में शामिल किया गया, जिसमें तेल, गैस की खोज, समुद्री शोध जैसे काम आते हैं, लेकिन मछली पकड़ने को इसमें शामिल नहीं किया गया। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तटीय इलाकों में ड्रिलिंग और खनन का अधिकार मिलेगा। भारत के लाखों मछुआरों के अधिकारों की अनदेखी होगी। क्या यही सरकार का सबका साथ और सबका विकास है? कहीं ना कहीं मछुआरों की आवाज को दबाना है। इसलिए हम कहना चाहते हैं सभापति जी, कुछ मछुआरों के हितों पर भी काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मछुआ आवास देने का काम किया था। मछुआ समुदाय के केवट निषाद समाज को उन्होंने तालाबों के पट्टे देने का काम किया था, उनकी पेंशन देने का काम किया था। तो क्या माननीय मंत्री जी को इस तरीके की कोई योजना नहीं लानी चाहिए जिससे इस मछुआ, केवट, निषाद समाज के लोगों का कल्याण हो सके? उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो ये जो जातियां हैं इनको SC ST का दर्जा देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रस्ताव बना करके भेजा, लेकिन वो भी अभी लंबित है। सरकार निषाद, केवट समाज को आरक्षण नहीं देना चाहती। ऐसे सभापति जी, हम कहना चाहते हैं, पुराने कानून में बिना लाइसेंस तटीय व्यापार करने पर 6 महीने की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना था। अब इस बिल में बढ़ा करके 15 लाख या कमाई का 4 गुना कर दिया है। ये किसके हित में है माननीय मंत्री जी? बड़ी कंपनियों के लिए तो ये छोटी रकम है, लेकिन जो छोटे जहाज मालिक हैं, जो मछुआरे हैं,
वो कैसे इतना बड़ा अर्थदंड दे पाएंगे। इसलिए सभापति जी, इस बिल में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी जहाज को जब्त कर सकता है। ये प्रावधान सरकारी दमन को बढ़ावा देगा कि क्या ये सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह ईज ऑफ हैरेसमेंट नहीं है। इसलिए सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, आज मछुआरों का खाली हाथ और आंखों में पानी, मछुआरों की यही कहानी। सरकार उनका समंदर छीन रही है और आंखों में पानी भर करके छोड़ रही। सभापति जी, इस बिल में राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग रणनीति बनाने की बात कही गई है, लेकिन इसमें 2 साल का समय दिया गया है। यानी सरकार के पास कोई योजना तैयार नहीं है, वो बिना सोचे समझे कानून ला रही है। आपका इशारा मैं समझ रहा हूं। मैं एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, ये बिल राष्ट्र विरोधी है। इस बिल में भारतीय समुद्री हितों को बेचने की तैयारी है। ये छोटे जहाज मालिकों, मछुआरों, देशी शिपिंग उद्योग के लिए विनाशकारी है। मैं सरकार से मांग करता हूं, इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए, इस पर व्यापक विचार विमर्श किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह साबित होगा कि सरकार विदेशी कारपोरेट के एजेंडे पर काम कर रही है। अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूं, सत्ता के दीपक जल रहे हैं पर मछुआरे अंधेरे में हैं। चौराहे पर खड़ा हुआ विकास सिर्फ भ्रष्ट तंत्र के फेरे में है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर रानी श्री कुमार जी। Thank you, Honorable Chairperson, sir. I rise to talk on this significant coastal shipping bill, which this government claims will promote coastal trade and encourage domestic participation. Despite being a country with about 7,500 km coastal length, 14,500 km inland waterways length, and being strategically located near major international shipping lanes, we have not utilized our crucial waterways to our full potential. Inland freight transport is just as per Niti Aayog. Maritime transportation, particularly coastal shipping, is widely recognized as a more cost-effective alternative to other modes of transport. So, when this bill was introduced, we hope that this bill would facilitate coastal shipping and promote employment opportunities for our people. But this bill has not only failed to address the crucial issues, it has also made it worse. As per Section 345, the Director General has been given considerable discretionary power in assessing applications and imposing additional conditions. While flexibility is necessary, excessive discretion without clear guidelines could lead to inconsistent or biased decision making. The Director General is given broad discretionary powers to suspend, revoke or modify licenses. While such powers are necessary for regulation, there are concerns about the lack of checks and balances. If misused, this could lead to arbitrary action without sufficient oversight. The criteria for suspension, revocation or modification of the license are broad, including violations of any conditions of the license or failure to comply with any applicable law. This could be seen as overly vague, leading to uncertainty and potential misuse. These sections does not clearly mention about any appealing process or mechanism for challenging the suspension, revocation or modification of a license. This could leave licensors without an effective way to contest decisions they perceive as unfair or unjustified. The term reasonable opportunity to be heard could be interpreted differently, leading to arbitrary application of the law. A more defined process could ensure fairness and clarity without giving undue power to the Director General of Shipping. As per Section 8 of this bill, the Union Government must publish a national coastal and inland shipping strategic plan within 2 years of the Act's commencement and update it every 2 years. The plan will include assessments of coastal shipping routes, operational improvements, long-term traffic forecasts, best practices, new routes, promotion of Indian vessels and other necessary matters. A committee will be formed to draft the plan, including members from various relevant agencies such as Director General of Shipping, Inland Waterways Authority, major ports, state maritime boards, ship owners, seafarers and maritime experts. The problem with this section is that the strategic plan is mandated to be drafted and updated every 2 years.
but who is responsible for its execution? There is no mention of performance monitoring to ensure that improvements are implemented. The committee is only responsible for drafting, not ensuring the implementation. The committee consists mostly of government representatives and some industry players. Key stakeholders like cargo owners, logistic providers and coastal community representatives are missing. Sir, the strategic plan mentioned promotion of Indian vessels, but how this will be done is unclear. No specific incentives, examples of subsidies, tax benefits are mentioned to encourage domestic vessel participation. Developed countries like China, European countries and USA are giving incentives and they are giving tax benefits to their own crews, and they are giving more efforts to develop the ports to enhance the shipping traders. But in India, despite playing Indian flags and employed Indian crew, Indian shipping companies has to pay high taxes, but the foreigners are enjoying the exemptions. The exemptions and the cost advantages should be given to the Indian shipping traders also. Very good, very good. The Coastal Shipping Bill 2024 introduces stringent penalties to ensure compliance, but a balanced approach is necessary to foster industry growth. While strict enforcement is essential to maintain safety and efficiency, excessive penalties without remedial provisions could discourage new entrants and smaller operators. Currently, penalties under Section 15, 16, 18 impose heavy fines, imprisonment and vessel detention for violations like unauthorized authorized operations, expired licenses and false reporting. However, the absence of grace periods or rectification opportunities may create intended barriers. To promote compliance without stifling participation, the bill could incorporate graduated penalties, warning mechanisms, or rectification periods for minor infractions. This would ensure regulatory discipline while allowing businesses, especially new entrants, to adapt to compliance requirements without disproportionate deterrence. Sir, India's coastline is not just a trade route. It is in a line of defense. We have seen smuggling, illegal fishing and even security threats from the sea. But this bill is silent on coastal surveillance, naval coordination and security measures. Nowadays, drug trafficking through Indian ports remains a growing challenge. One of the most critical measures India must adopt to curb drug trafficking is the enhancement of the port surveillance and the integration of advanced technology in security operations. If India fails to modernize its port security infrastructures, its port will remain soft targets for international syndicates, undermining national security, public health efforts. Sir, கடைசியாக ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கிறேன். அண்டை நாடுகளுக்கெல்லாம் பொருளாதார நெருக்கடி வரும்போது உதவி செய்கின்ற இந்த ஒன்றிய அரசு அண்டை நாடுகளால் எங்களது தமிழக மீனவர்கள் பாதிக்கப்படும் போதும் துன்புறுத்தப்படும் போதும் மௌனமாக கையை கட்டிக்கொண்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருப்பது மிகுந்த வேதனை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டால் மீனவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள். இந்த ஒன்றிய அரசு எங்கள் தமிழக மீனவர்களிடம் மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆனால் நாங்கள் அப்படி அல்ல. இந்திய மீனவர்கள் எல்லாரையும் எங்களது சகோதரர்களாகவே கருதுகிறோம். எனவே இந்த மீனவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் வகையில் கொண்டு வரப்படும் இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டால் நாங்கள் அதை ஆதரிக்கவும் மாட்டோம், அதை நாங்கள் அமல்படுத்தவும் விட மாட்டோம். Therefore, Tamil Nadu government under the able leadership of our Chief Minister taking lot of steps and measures to uplifting the traders. So I request the Union government to follow the steps of our able leader, our Honorable Chief Minister, in uplifting the traders. Therefore, I ask the Union government to modify this bill accordingly, taking into the concern of the coastal state governments, industry stakeholders and the fishermen community. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member N.K. Premchandranji. Yes,
Thank you very much, Mr. Chairman, sir. I rise to support this bill with certain strong reservations and concerns and seeking clarifications from the Honorable Minister. Sir, this bill, there is a Coastal Shipping Bill 2024, that is 2025, seeks to repeal Part 14 of the Merchant Shipping Act 1958, except Section 411, capital A. So the primary advantage of having coastal shipping is that it can result in shaping necessary national and state policies, state-level policies and programs targeted towards transportation, logistics and trade. Sir, this coastal shipping bill, the government is forced to bring this bill according to my limited information, limited knowledge. This coastal shipping bill 2024 is brought in because of the competition with the foreign flag vessels and the Indian flag vessels. So it is giving a preferential treatment to the Indian flag vessels. That is why I am supporting this bill. Sir, a large number of coastal population is depending on the activities related to the seas and bays. By means of this legislation, government intends to improve the modal share of the coastal shipping from the current rate of 6.4% is the rate, model rate of, as per the present rate of coastal shipping, and it is to be increased to 7.5% by 2030 and ultimately 12% by 2047. Sir, the share of coastal shipping in Japan, European Union is 5 to 6 times greater than, higher than that of India. And as far as China is concerned, it is 7 times higher than that of India. This is the global scenario, global situation prevailing as far as the coastal trade is concerned or coastal shipping is concerned. My specific question to the Honorable Minister is whether the government is able to achieve the target of 12% modal share by 2047 through this legislation alone. According to me, it is not possible unless and until the government have a strong political will to implement the program, implement the provisions of this bill in a better way. Sir, through the bill, though the bill is a welcoming step as far as Indian flag vessels and operators are getting preferential treatment in coastal trade to foreign flag vessels, I have some reservations, strong reservations and concern. I would like to flag it as one by one. Sir, number one, that is regarding, I am seeking the explanation or the clarification from the Honorable Minister. That is regarding the applicability of the Act. Sir, clause 1 of the Act says that this Act shall apply to every clause A. Clause 1, subclause A, every vessel other than the Indian vessel engaged in coasting trade irrespective of the place of residence or domicile of the owner. Clause B, every chartered vessel referred to in chapter 4. This is the provision which is given applicability of the Act according to clause 1. Sir, coming to clause 6 of the bill, it is very specifically stated that every vessel, including Indian vessels, engaged in coasting trade shall report to the Director General the following information in such form and manner as may be prescribed, namely. So, applicability of the Act is, I have clearly mentioned in clause 1, applicable to only this vessel, vessels other than, it is applicable only to every vessels other than the Indian vessel, but clause 6 is very clear that is Indian vessels also it is applicable. I am not going to chapter 6 of the Act. There is a specifically it is stated that Indian vessels will be applicable according to chapter 6, but this 6 it seems to be contradictory because one way it is applicable only to these vessels and here it is in a different way by virtue of clause 6. That is the first clarification I am seeking. And second one is regarding the definition of cooperative society and the limited liability partnership is not provided. Definition for these two terms, cooperative society as well as the limited liability partnership, is not provided in the bill, either in this bill or in the Merchant Shipping Act or in the notified Merchant Shipping Bill. It is not specifically, the definition is not provided. That is the second concern I would like to make. And the third one is regarding clause 18A. Clause 18, subclause A of the bill,
When the licensee failed to furnish the information required by Director General within the stipulated time, it attracts harsh punishment. Just now, my learned friend has already spoken about it. That is, what is the punishment? Punishment is imprisonment for 6 months and fine up to 50,000 or both. If a operator or vessel owner is not providing the information as required by the DG shipping, then there is a punishment for 6 months imprisonment or 50,000 rupees fine, or both means that is a disproportionate punishment is provided in clause 18A. That is not fair according to me. So that has to be looked into. And also further, at the same time, it is in section. So another point to be noted is under section 35(2), clause 3. The Director General can ask any other matter as may be prescribed. So absolute discretion is provided to the DG. When you are having disproportionate punishment on one side of 6 months imprisonment and 50,000 rupees fine or both, and at the same time it is a discretionary power is given to the Director General that any matter as may be specified can be asked for information or require information from the concerned persons. That means unfettered authority, discretionary powers is vested with the Director General. That has to be looked into, as it is arbitrary in providing excess powers to the Director General. And the fourth concern is regarding under section 26(1) and section 30 clause 5 of the bill. That is, the offences mentioned under section, the penal provisions under section 15 to 25 all are compoundable. That also, one side it is harsh punishment and other side all are compoundable offences. It may lead to bureaucratic corruption and thereby harassing the operators or licensees. And the fifth point is there is no dispute resolution mechanism for promoting ease of doing business. The government is always talking, almost all the legislations are for ease of doing business. If you want to achieve this ease of doing business, there should have a dispute resolution mechanism should be there. Unfortunately, in this bill, it is missing. That is to be looked into. Sir, I would like to conclude my speech with 2-3 suggestions also. Sir, number one suggestion is, since large part of the coastal shipping in India is in the unorganized sector, state government and district authorities should also be allowed to issue licenses for small vessels and country boats which are conducting voyages on shorter routes and are at the cross-border level in border areas. The second suggestion is the process of getting vessels registered should be made easy with fewer documents in transparent and digitalized manner, and special assistance should be provided to vessel owners. Number 2. And the third one is the National Register of Coastal Shipping must be made available in the public domain with the integration from other relevant organizations such as Director General of Foreign Trade. And sir, I'm finishing. And the fourth one is dispute resolution mechanism, which I've already explained that should be established. Sir, I'm concluding, the success of the regulatory framework depends on the efficiency and transparency of enforcement mechanism, as well as the capacity of the Director General Shipping to handle the increased responsibility. Hope that the government will consider these suggestions and concerns, then that will be addressed in future amendments. With these words, I conclude. Thank you very much, sir. Thank you, Honorable Member D. Ravi Kumar ji. D. Ravi Kumar. தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். இந்த மசோதா ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற மசோதா என்பதால் முதலில் பாராட்டுகிறேன். ஏனென்றால் இதன் மூலமாக ஈட்டப்படுகிற வருவாய், கடல் வணிகத்திலே ஈட்டுகிற வருவாய் என்பது பிற நாடுகளை ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் மிக குறைவாக இருக்கிறது. சீனா நம்மை போல 7 மடங்கு மூலமாக வருவாய் ஈட்டுகிறது. எனவே இப்பொழுது அந்த வருவாயை கூட்டுவதற்காக எடுக்கப்படுகிற இந்த நடவடிக்கை பாராட்டத்தக்கது. இந்தியாவிலே நீண்ட கடற்கரையை கொண்ட 2வது பெரிய மாநிலம் தமிழ்நாடு. 1076 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கடற்கரையை கொண்ட மாநிலம். 3 பெரிய துறைமுகங்கள், சென்னை, எண்ணூர், தூத்துக்குடி துறைமுகங்கள், 17 சிறு துறைமுகங்களை கொண்ட மாநிலம் எங்கள் தமிழ்நாடு. அங்கே இருக்கின்ற இந்த கடல் வளங்கள், கடல் வணிகத்தை பெருக்குவது, இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு, குறிப்பாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள்
2023ஆம் ஆண்டிலே இதற்கான ஒரு கொள்கையை வகுத்திருக்கின்றார்கள். அதிலே இந்த கடல் வழியை பயன்படுத்தி வர்த்தகத்தை அதிகப்படுத்துவது, குறிப்பாக சரக்கு போக்குவரத்தை அதிகப்படுத்துவது. ஏனென்றால் சாலை போக்குவரத்து இன்றைக்கு நெரிசல் மிகுந்ததாக மாறிவிட்டது. எனவே கடல் மார்க்கமாக சரக்கு போக்குவரத்துகளை அதிகப்படுத்துவதற்காக அந்த கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான நிதி உதவியை அவர்கள் ஒன்றிய அரசிடம் கோரியிருக்கிறார்கள். எனவே அதற்கான நிதி உதவியை ஒன்றிய அரசு கொடுத்து அதை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அங்கே இருக்கின்ற 17 சிறு துறைமுகங்களில் சில துறைமுகங்கள் கேப்டிவ் போர்ட்ஸ், குறிப்பான ஒரு நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுகிற துறைமுகங்களாக இருக்கின்றன. அவற்றை மேம்படுத்துவதற்காகவும் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசு பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அதற்கும் ஒன்றிய அரசு ஒத்துழைக்க வேண்டும், நிதி உதவியை அளிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இதிலே இந்த சட்டத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற ஒரு முக்கியமான அம்சம், இது டெரிட்டோரியல் வாட்டர், அதாவது கடற்கரையிலிருந்து 12 நாட்டிக்கல் மைல் வரை இருக்கிற அந்த கடற்பரப்பை டெரிட்டோரியல் வாட்டர் என்று நாம் அழைக்கிறோம். அந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர் என்பது ஏற்கனவே மாநில அரசுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கின்றன. மாநில அரசுகள் தான் அதன் மேலே அதிகாரம் செலுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றன. ஆனால் இந்த சட்டம் அந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர், அட்ஜாயினிங் வாட்டர் இரண்டையும் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு அதற்கான விதிமுறைகளை வகுத்திருக்கிறது. எனவே இது மாநில அரசுடைய அதிகாரத்துக்குள் தலையிடுவதாக இருக்கிறது. எனவே இந்த அம்சத்தை நான் வன்மையாக எதிர்க்கிறேன். இந்த அம்சம், அந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர் என்பது அதிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும். மாநில அரசுடைய அதிகாரத்திலே தலையிடுவதை ஒன்றிய அரசு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதுவும் குறிப்பாக கடந்த 17வது நாடாளுமன்றத்திலேயே அவர்கள் இந்த ஸ்மால் போர்ட்ஸ், மைனர் போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும், சிறு துறைமுகங்களை எல்லாவற்றையும் ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்காக ஒரு நடவடிக்கை மேற்கொண்டார்கள். 2021 தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அங்கே பொறுப்பேற்றதும் அதை எதிர்த்து ஒரு கடிதத்தை எழுதினார்கள். அதன் பிறகு அந்த மசோதா நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. எனவே இன்றைக்கு மறைமுகமாக இந்த சட்டத்தின் மூலமாக அதே வேலையை ஒன்றிய அரசு செய்ய முற்படுகிறது போல தோன்றுகிறது. எனவே மாநில அரசினுடைய அதிகாரத்துக்குள் தலையிடுகிற போக்கை ஒன்றிய அரசு நிறுத்த வேண்டும். அதற்கான அம்சத்தை இந்த சட்டத்திலே நீக்க வேண்டும் என்று நான்